Welcome friends in new lecture. In last lecture we learned about half transaction cash and half credit, the upper level transaction. I hope you understood this, and now in new lecture we are going to start a new point, capital transaction. Listen me carefully. Capital transaction. First of all, question is that what is capital? Listen me carefully. Capital means assets, some asset, cash, brings by owner in the business. It is known as a capital. अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, if you want to start a new business, then investment in the business is most necessary. For this purpose, asset, cash, etc. all brings by owner in the business. It is considered as a capital of owner. अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ओनर अपने घर से, अपनी प्राइवेट एसेट से जो भी कैश, जो भी एसेट बिजनेस में लाएगा वो ओनर की कैपिटल होगी. एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अकाउंटेंसी, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड. कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड. रिमेंबर दिस. नाउ सम एग्जांपल about capital transaction. Rupees 1 lakhs cash, rupees 2 lakhs of furniture brings in the business. Owner of business brings rupees 1 lakhs cash and 2 lakhs of furniture in the business. Now, rupees 1 lakhs cash comes in business. Rupees 2 lakhs of furniture also comes in business. You all know very well that cash and furniture both are an asset. Asset including real account. And rule of real account, debit which comes in, credit which goes out. Here, both asset, cash and furniture comes in the business because it is brings by owner in the business. Both asset comes in, and whenever asset comes in the business, it must be debited. Here 1 lakh rupees cash comes in, therefore cash account debit 1 lakhs. Rupees 2 lakhs of furniture comes in, and therefore it must be debited because furniture is also an asset. Furniture account debit. Total amount 1 lakhs of cash and 2 lakhs of furniture brings by owner in the business. And whenever owner brings any asset, any cash in the business, it is considered as the capital of the owner. And you all know very well that capital account always credited. His total amount of 3 lakhs transferred to capital account. Capital account always credited to capital account. Accounting treatment of capital transaction. Next one. Rupees 1 lakhs cash, rupees 2 lakhs of furniture, rupees 3 lakhs of building, and rupees 4 lakhs of stock brings in the business. This all asset brings by owner in the business. That means this all asset comes in business. Cash bring, cash means asset. Furniture bring, furniture means asset.
Building means asset, and stock means also an asset. All asset comes in the business, and whenever asset comes in, you all know very well that according to rule of real account, debit which comes in, credit which goes out. Whenever asset comes in the business, it must be debited. Now, all asset comes in and therefore debited. Cash account debit 1 lakhs. Furniture account debit 2 lakhs. Building account debit 2. Stock account debit. These all items brings by owner in the business, and whenever owner brings anything in the business, it is considered as a capital, and capital account always credited. Total amount brings by owner 1 and 2, 3 lakhs and 3, 6 lakhs and 4, 10 lakhs. These total items of 10 lakhs brings by owner in the business, it is considered as a capital of the owner, and therefore capital account must be credited to capital account. 10 lakhs. Further, rupees 1 lakhs cash, rupees 2 lakhs furniture, rupees 3 lakhs building, rupees 4 lakhs of stock, and rupees 5 lakhs of debtors, brings in business. Here 1 lakhs cash, 2 lakhs of furniture, 3 lakhs of building, 4 lakhs of stock, and 5 lakhs rupees of debtor. Debtor is the new point. What is debtor? Debtor means a person from which our receivable. डेटर यानी ऐसा पर्सन के जिसके पास से हमें पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर होता है, वो भी हमारा रिसीवेबल है, इसीलिए उसको एसेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। डेटर्स के पास से हमारे पैसे लेने हैं हमें, वो पैसे ही है और पैसे को एसेट बोलते हैं। ये रिसीवेबल है हमारा और रिसीवेबल को एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसीलिए डेटर इज वन टाइप ऑफ एन एसेट इन दिस ट्रांजेक्शन। एसेट की तरह ही इसे ट्रीट किया जाता है। Now, this all asset comes in the business, and whenever asset comes in, it must be debited. Cash account debit 1 lakhs. 2 lakhs of furniture comes in, debited. Furniture account debit. 3 lakhs of building comes in, debited. Building account debit. 4 lakhs of stock comes in, debited. Stock account debit. 5 lakhs of debtors comes in. Debtors means also asset. Debtors account debit. Is all item brings by owner. All are asset. It must be credited to capital account. 1 into 3 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs and 15 lakhs transferred to capital account. 15 lakhs. Now listen me my friends, my student. Why capital account always credited?
You know, capital is a liability of business. ये बिजनेस की लायबिलिटी है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैपिटल तो ओनर जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, तो ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे हो गई बिजनेस की? हर ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माई बिजनेस। हम ये ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें मैंने पैसा डाला तो वो भी मेरा ही है। सही बात है, हमारी ओर से ये सही बात है, बट रूल ऑफ अकाउंटेंसी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस बोथ आर सेपरेट। लिसन मी केयरफुली, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। According to accountancy, business and owner of business both are separate, and therefore, whenever some asset, cash, brings by owner in the business, it is considered by business as a loan taken from owner. It is considered by business as a liability. You all know very well that liability always credited, and therefore it is the main reason that capital account always credited. ये हम सोचते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, हमने इसमें इन्वेस्ट किया, कोई बात नहीं, ये सब हमारा ही है। लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा नहीं सोचता। अकाउंटेंसी के विचार से अगर देखें तो बिजनेस एंड ओनर दोनों सेपरेट है, अलग है। इसीलिए ओनर जब कोई एसेट, कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी बिजनेस ऐसा कंसीडर करता है कि ओनर के पास से हमने लोन ली है। इसीलिए ओनर जो भी आइटम, जो भी एसेट बिजनेस में लाता है उसको बिजनेस अपनी लायबिलिटी समझकर उससे क्रेडिट करता है। ये कैपिटल अकाउंट है, वो ओनर का अकाउंट है। ये बिजनेस ने क्या बताया आपको कि इतना रुपए हमें ओनर को देने हैं, हमने ओनर के पास से लोन ली है 10 लाख रुपए की, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। नाउ लिसन मी, नाउ वन एडवांस ट्रांजैक्शन, ₹2 lakhs cash, ₹2 lakhs of furniture, ₹2 lakhs of stock, ₹2 lakhs of building, ₹2 lakhs of debtors, and ₹2 lakhs of creditors brings in the business. Here new point, ₹2 lakhs of creditors. What is creditors? Creditors means a person to which we are responsible to pay in future, means our liability. क्रेडिटर यानी हमारी लायबिलिटी है, एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो ये हमारी लायबिलिटी है। देखिए, जो भी एसेट बिजनेस में आती है वो डेबिट होती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट। एसेट कम्स इन मस्ट बी डेबिटेड, एसेट गोज आउट मस्ट बी क्रेडिटेड। जो भी एसेट बिजनेस में आती है डेबिट होती है, सेम वे जो भी लायबिलिटी बिजनेस में आती है क्रेडिट होती है, बिकॉज क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी, एंड व्हेन अवर लायबिलिटी कम्स इन इट मस्ट बी क्रेडिटेड। नाउ ऑन बेस ऑफ दिस रूल, accounting treatment of this transaction, ₹2 lakhs cash comes in. Cash means asset, must be debited. Cash account debit 2 lakhs. 2 lakhs of furniture. Furniture means asset, comes in, debited. Furniture account debit. 2 lakhs of stock. Stock comes in, debited.
stock account debit, 2 lakhs of building comes in, debited, building account debit, 2 lakhs of debtors comes in, debtor means receivable, it is one type of an asset, debtors account debit, asset comes in, must be debited. Same way, liability comes in, must be credited. Here, creditors brings by owner. Creditors means our payable, our liability. Liability comes in, it must be credited to creditors account. You know, it's a capital transaction. Then in this situation, how much rupees transferred to capital? Listen me carefully. In this type of situation, net profit always transferred to capital account. Now net profit, what is net profit? Whenever asset comes in the business, it is considered as a profit. But whenever liability comes in, it is considered as a loss of the business. Profit minus loss, यानी asset minus liability equal to net amount. It is a net profit. It must be transferred to capital account. Now, how much rupees of asset comes in? It is considered as a profit. 2 and 2, 4 and 2, 6 and 2, 8 and 2, 10 lakhs. Total 10 lakhs rupees of asset comes in the business. It is considered as a profit of business. Here 2 lakhs rupees of liability also comes in, and whenever liability comes in, it is considered as a loss of the business. Minus loss 2 lakhs. 10 lakhs of asset comes in, it's a profit. 2 lakhs of liability comes in, it's a loss. Now profit minus loss equal to net profit how much? 8 lakhs. It must be transferred to capital account. To capital account. These are the example of capital transaction. After this discussion, now time for today's homework, today's practice work. Today's homework. Journalize this transaction. Rupees 2 lakhs cash, rupees 2 lakhs of furniture, rupees 2 lakhs of building, rupees 2 lakhs of stock, rupees 2 lakhs of debtors, brings in the business. First one. And now second one. Rupees 3 lakhs cash, rupees 3 lakhs of furniture, rupees 3 lakhs of building, rupees 3 lakhs of stock, rupees 3 lakhs of debtors, and rupees 3 lakhs of creditors, brings in the business. ये दो ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए. इन सब का बराबर अभ्यास करने के बाद ये दो ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस के बिना अकाउंटेंसी में मास्टरी कभी भी नहीं आ सकती. ये बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब.
हर रोज जो भी वर्क मैं आपको कराता हूं ठीक से पढ़िए उसको, उसके बाद उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिस में देता हूं वो भी ठीक से करिए, तभी आपकी मास्टरी आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हरगिज मास्टरी नहीं आएगी। अगर हर रोज नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टरी आपकी है, ये मेरा प्रॉमिस है। ये इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे और ट्रांजैक्शन आप अपने आप बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी प्रैक्टिस कीजिएगा आप मास्टर बनिएगा। और ये जर्नल एंट्री जो है वो पूरे अकाउंट की नींव है। अगर इसमें मास्टरी है तो आगे सब कुछ आपके लिए इजी होगा। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, ये बराबर पढ़िए और कॉमर्स के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की ओर ये लिंक भेजिए, उसको घर बैठे पढ़ने का लाभ दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।